यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा, द लायन, द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज a 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड by Andrew Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज a 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड by Andrew Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज a 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड by Andrew Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution। इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution। इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, हु co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Narnia film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी कुछ अंदर पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marker, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution। इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution। इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 million बॉक्स ऑफिस $745 million। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch,
and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लॉयन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू Adamson, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Tudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Picture Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश बजट $180 मिलियन बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नायरा द लायन द विच एंड द वार्डरोब इज ए 2005 हाई फैंटेसी फिल्म डायरेक्टेड बाय एंड्रू एडम्सन, who co-wrote the screenplay with Anne Peacock and the writing team of Christopher Marcus and Stephen McFeely. Based on the 1950 novel The Lion, the Witch and the Wardrobe, the first published and a second chronological novel in the children's book series The Chronicles of Naira by C.S. Lewis. The film is the first installment of the Chronicles of Naira film series. It was produced by Walt Disney Pictures and Walden Media and distributed by Buena Vista Pictures Distribution. इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Andrew Adamson, screenplay by Anne Peacock, Andrew Adamson, Christopher Marcus, Stephen McFeely, based on The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, produced by Mark Johnson, Philip Stewart, starting Georgia Henley, Iskandar Keynes, William Mosley, Annie Popplewell, Dudley Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Liam Neeson. Cinematography Donald L. McAlpine. Produced production companies Walt Disney Pictures, Walden Media, Mark Johnson Productions. Distributed by Buena Vista Pictures Distribution. Release date 7 December 2005. Royal Film Performance 8 December 2005 United Kingdom. 9 December 2005 United States. Running time 143 minutes. Country United Kingdom. यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $180 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $745 मिलियन। तो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।